हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज घसीराम भाई से सुनेगा, क्योंकि ये नहला इतना ब्यूटीफुल जगह है। देखो कि फॉरेस्ट क्यों, जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली तो हम लोग का ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादातर फॉरेस्ट है, ग्रीन है, और हम लोग इतना प्रोटेक्ट करके रखा है। हम लोग का एंसेस्टर लोग ना, हम लोग का पूर्वज लोग इस जंगल को बचाया है, लड़ाई किया है जंगल के लिए, अपना ज़मीन जल ना, ये सब के लिए हम लोग लड़ाई किया है जंगल के लिए ना। तो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, फैक्चुअल में ना, फैक्ट्स में भी देखेगा हम लोग। घासीराम से पूछता है, घासी आपको क्या लगता है, हम लोग आदिवासी कम्युनिटी का है, हम लोग जंगल में रहता है, बचा के रखता है जंगल को, क्या इम्पोर्टेंट है, हम लोग को क्या मिलता है? जोहार। और हम लोग कंधा आदिवासी है, यू नो, सो वी आर लिविंग inside the forest area, so that's why forest is very important. So tribal all are living through the mountain, through the fountain, everywhere you can see green, and you can get everything inside the forest. That is why we are getting fresh bamboo, kuri, mushroom, like many more things we can get from jungle, kanda, sweet potato, and everything. So that's why we are very happy and we are lucky that we are tribal and we are living under the mountain. So luckily we are getting fresh air, ventilation. We are not getting a town fresh air, everyone knows. So everybody knows, or everybody wants to go tribal area because they want to see the mountain and everything. So that's why they are they want to get air fresh air, fresh air, so Thank you, Gasi. And then Gasi, the important thing is we are protecting the forest, and then we are getting so much food, fresh air. So is it important for us to protect the forest or not? we get everything from the forest. That's why we are protecting forest. This is very important for everyone. So inform everyone to save forest. That is our rules and our hope, our everything.